डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। तो चलते हैं आज 10th के बायोलॉजी के पेपर की तरफ। तो मैं आपको एंड अडैप्टेशंस इन प्लांट्स, डिफरेंट बिटवीन एक्सरोपैथीज एंड halopathies, differences between hydropathies and exopathies, right known on neuron, structure of the human eye, right note of forebrain, function of lobes of the cerebrum, and cartilage and its type. Next, type of joints, arthritis and its type. Next long question, advantages and disadvantages of vegetative propagations. A note on reproductive system of female rabbit. Conduction for fermentation of seed. Nitrogen cycle. Biotic elements of the ecosystem. Next, carbon circle. Purpose and aim of genetic engineering. Step of genetic engineering. Use of biotechnology. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा लेंगे और अपना बहुत सारा साथ साथ ख्याल रखिएगा। लेकिन अब मैं आपको MCQs बता दूँ कि किस किस में से आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से 2, 13 में से 1, 14 में से 1, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से 1 और 18 में से 1। टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस करेंगे हर एक के अंदर। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन जिसमें 13, 14 और 15 होंगे और टोटल 8 होंगे जिसमें से आप 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन जिसमें चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 8 जिसमें से आप करेंगे 5। और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में से होगा चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तो ओनली 4 चैप्टर कर लीजिएगा जिसमें 11, 12 कर लें, 13, 14 कर लें। अगर आपको ज़्यादा इजी 16, 17 लगते तो वो कर लें, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, इसलिए इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ लाहौर के लिए है, ये मुल्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए है, बहालपुर के लिए, रावलपिंडी के लिए है, तो ये या डेजी खान के लिए, तो ये सब के लिए है। इसलिए सभी लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 के अंदर? स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, फंक्शंस ऑफ द नसल्स कैविटी, फंक्शंस ऑफ द म्यूकस, डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, व्हाट इज द डायफ्रागम and trachea. Next, symptoms of phenomena and asthma. Next, acute and chronic bronchitis, effects of smoking, voice box and bronchus. तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं? होमोस्टेसिस एंड एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन osmoregulations and thermoregulations, pressure filtration, tubular secretions, glomerulosis filtrate, lithotripsy, renal cortex and renal medulla, kidney transplant and dialysis, kidney stone and its symptoms। तो ये दूसरा यूनिट के बाद यूनिट नंबर 3 जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। कोऑर्डिनेशन एंड नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, गैंग्लाइंस, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर्स,
Difference between a reflex action and reflex arc. Somatic and autonomic nervous systems. Myopia and hypermetropia. Next, define hormone and endocrine system. Next, pituitary gland and its function. Chapter number 4. Skeleton and endoskeletons. Difference between flexor and intensor and osteocytes. Next, number of bones in the axial and appendicular skeleton. Next, types of joints. Next, difference between tendons and ligaments. Next, what is bone? Next, difference between compact and spongy bone and osteoporosis. Chapter number 5. Reproduction and its type. Next, fragmentations. Next, multiple fissions and parthenocarpy. Next, benefits and disadvantages of vegetative propagations and endosperms. Pollinations, self-pollination and cross-pollination, alternation of generations. तो चैप्टर नंबर हमारे पास 6. What is the trait? Define heredity with examples. Next, codominance and incomplete dominance. Next, difference between genotype and phenotype. Difference between dominant and recessive allele. Difference between genes and allele. Next, artificial and natural selections. Next, difference between homogeneous and heterogeneous alleles. Difference between translation and transcriptions. Chapter number 7. Define ecology and community. Define ecosystem. Define mutualism with an example. What is acid rain and give its effect. Next, production with example. Difference between food chain and food web. Next, difference between ecto and endoparasites. Next, difference between nutrification and denutrification. What is the symbolizes? Chapter number 8. What is the biotechnology? बहुत important chapter है. Single cell proteins. Next, what is the fermenter and give it advantages. Next, purposes of genetic engineering. What is the recombinant DNA? Next, define fermentation. Define alcoholic and lactic acid fermentation. Unit number हमारे पास 9. Define pharmacology and give its relation to paramecia and vaseline and vaccinations. Next, narcotics and hallucinogens, sedative and its harms. Difference between analogous and antibiotic. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. नंबर 1. osmoregulatory functions of the kidney. Structure and function of nephron with diagram. Osmoregulation